A very good morning to all of you. How are you all, students? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kolsala from Atmiya Green School, Jadeshwar. So let's start our today's class for English. And today we would be starting with English grammar, and today we would be doing the first chapter of our PT3 syllabus, and that is chapter number 17, Simple Present Tense. So do you have any idea, students, what is tense? Well, tense means the time. It shows the time of an action. That means when the action actually took place. So today we are going to study about simple present tense, means the action which took place right now or it happens regularly. Okay, so let's see our chapter simple present tense. So let's see the definition of present tense. The present tense, simple in English, is used to describe an action that is regular, true or normal. So we are going to use present tense for the actions which are happening on the regular basis. That means daily, or the activities which are our habits. We do it on the regular basis, which is true. That means it's a fact and it's normal. Right? For example, babies cry. Now that is a normal thing. The earth moves around the sun. That is a fact. Right? That happens. It's a truth and it's a fact. So we are going to use present tense for such activities. I wake up early in the morning. So now this thing happens on the regular basis. So these all things are indicated by a present tense. So when are we going to use present tense? हम प्रेजेंट टेंस तब यूज़ करने वाले हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जो एक ट्रूथ है और जो नॉर्मली अप्रूव्ड है. ठीक है, सो ऐसी चीज़ों के लिए हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. So students, I request you to open page number 64 of your grammar textbook, that is Adventures with Grammar and Composition. And we would be studying the chapter Simple Present Tense. So here there is a conversation between two of them which is given over here. So we'll just read it. Meet my friend Lulu. He is a llama. He lives in Andes mountain of South America. He belongs to the camel family. His special padded feet help him to walk on sharp rocks. He carries heavy loads and travels long distances. He eats grass and shrubs. He also likes apples, carrots, broccoli and orange peels. So here we can see there are some words which are in bold. Right? Meet, lives, belong, help, came, travel, eat, likes. Right? So these are some words which are in bold. That means they are written in a different way. Why is it so? क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं या फिर ये जो sentences लिखे हुए हैं किसके बारे में? लामा के बारे में, right? These all are talking about llama and talking about the activities which he does on the regular basis. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है या फिर उसके बारे में जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें क्या है? सच है. इसीलिए हमने कौन सा टेंस यूज़ किया है? प्रेजेंट टेंस. और याद रखना है बेटा, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का बेस फॉर्म. ओके, द वर्ब बेस फॉर्म इज इन प्रेजेंट टेंस. सो लेट्स सी. So here you can notice the words highlighted above are the verbs, right? These are verbs. And I hope that you know what are verbs. Verbs means action words. That means वो वाले words जो action दिखाते हैं, right? The action which is going on. And वो जो words होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? Action बताते हैं. And those action words are called verbs. So you can see some words in the base form. जैसे कि मीट एंड हेल्प, ये दोनों कौन से फॉर्म में है? बेस फॉर्म में. और दूसरे वर्ड्स है जैसे कि लिव्स है,
belongs है, carries, travels, eats and likes. These are also in the base form, but along with it they have added s. So you can see here कि these words are also base form, but along with the base form they have added s. Okay, so हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब दो फॉर्म में यूज़ करते हैं. एक होता है बेस फॉर्म और दूसरा होता है बेस फॉर्म के साथ एस का एडिशन. ओके, now why does Post use verbs in this way? What do you think? Why is he using verbs in such way? Post uses verbs in this way because he is talking about llamas regular actions in the present tense, and so these verbs are in simple present tense. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे वर्ड्स है इसके अंदर, वो सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं? लामा के रेगुलर एक्टिविटीज़. व्हाट इज़ इट शोइंग? इट इज़ शोइंग द रेगुलर एक्टिविटीज़ जो लामा करता है या फिर जो लामा के बारे में सच है. जैसे कि लामा लिव्स इन एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, सो दिस इज़ अ ट्रूथ, राइट? ही बिलोंग्स टू अ कैमल फैमिली. These all words shows that this thing is true about llama and the activities like he carries heavy loads and travels long distances. He eats grass and shrubs. He also likes apples, carrots, broccolis and orange peel. ये सारी चीज़ जो लामा के रेगुलर हैबिट्स या फिर उसके रेगुलर ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रही है, वो सारी चीज़ें भी प्रेजेंट में ही हो रही है, राइट? And so to describe such activities or such actions which are regular and normal and true, ठीक है, जो actions रेगुलर बेसिस पे होते हैं जैसे कि सुबह जल्दी उठना या फिर सन का राइज होना ईस्ट में, राइट? द सन राइजेज इन द ईस्ट. I wake up early in the morning. I attend live class at 9 a.m. Right? So all these activities you are doing on a daily basis. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें present tense use करना है, ठीक है? So we use simple present tense to do the action, to talk about the actions that we do again and again. So ध्यान रखना है present tense कब use करते हैं? उस एक्शंस के लिए जो हम बार बार कैरी आउट करते हैं, मतलब रेगुलरली जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए हमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर. सो वी डू दिस एक्टिविटी ऑन द डेली बेसिस, राइट? तो यहाँ पे उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ किया है? वॉश, एंड दैट इज़ द बेस फॉर्म, एंड इट ऑल्सो शोज द एक्शन, राइट? Who is carrying out the action? We. और हम क्या कर रहे हैं? हाथ धो रहे हैं. तो हाथ धोना, what is that? That is a action, and that action is written in present tense. Let's see the second one. We go to school every day at 7:30 a.m. So here also you can see that the verb go, मतलब जाना, right? That is in present form or the base form because this activity is done regularly. You go to school every day. That means ये action हमारी क्या हो गई? हम लोग रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, इसीलिए हमें कौन सा टेंस यूज़ किया है? Present tense. So students, I hope that you are clear with this topic, that is simple present tense. Now here there are some actions. You need to circle the actions that you do regularly. That means जो सारी activities या जो सारी actions आप regular basis पे करते हो उसके अंदर उसके ऊपर circle करना है. जैसे कि jog in a park, read a book, drink milk. For example, if you drink milk daily, then you can just circle it. Talk to my grandmother, water plants in garden, play with friends, eat fruits, right? So आप जो activities करते हो regularly वो आपको सर्कल करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम वर्ब का बेस फॉर्म कब यूज़ करते हैं और एस कब लगाते हैं बेस फॉर्म के साथ, ठीक है? सो लेट्स सी दैट टॉपिक. सो नाउ कम ऑन पेज नंबर 65. वी टॉक अबाउट प्लूरल नाउन्स. We use the base form of the verb. For example, birds fly. Now what will decide कि आपको base form use करना है कि base form के साथ s add करना है? It depends on your subject. If your subject is plural, then
योर वर्ब हैज़ टू बी इन द बेस फॉर्म. आपको कब बेस फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का? व्हेन योर सब्जेक्ट इज प्लूरल. जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमें वर्ब बेस फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन्स वी एड एन एस साउंड टू द वर्ब. व्हाट डू वी एड? वी एड एस टू द बेस फॉर्म, उसका साउंड, क्योंकि वो एस हो सकता है, ई एस हो सकता है, या फिर आई ई एस भी हो सकता है. द ओनली एक्सेप्शन ओवर हियर, दैट मीन्स द ओनली वर्ड्स जिसके साथ हमें बेस फॉर्म यूज़ करना है वो है आई एंड यू. यू सिंगुलर. आई क्या बताता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. एंड यू इज यूज्ड फॉर सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. तो हमें आई और यू के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, अलॉन्ग विथ आई वी आर गोइंग टू यूज़ फ्लाई. ठीक है, यू फ्लाई. ओके, अभी जैसे बर्ड्स हैं यहाँ पे, राइट, बर्ड्स फ्लाई, उसकी जगह पे अगर मैं बर्ड लिखती हूँ तो ये बर्ड क्या हो गया? आपका सिंगुलर नाउन हो गया. तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लाइज. सो यहाँ पे हमने फ्लाई के अंदर कौन सा साउंड ऐड किया? एस का साउंड ऐड किया, राइट. सो वी विल जस्ट लर्न हाउ टू मेक चेंजेस इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन योर नाउन इज सिंगुलर. जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तब हम बेस फॉर्म के अंदर एस ऐड करते हैं, तो वो स्पेलिंग रूल्स डिफर होते हैं, ठीक है. सो वी विल सी दैट. बिफोर मूविंग टू दैट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू समथिंग एल्स. Okay, so students, here we are going to talk about the verb form जिसमें change होता है, ठीक है, जिसमें हमें sound s मिलता है. So you need to remember when are we going to use the base form along with s. हमें s वाला base form कब use करना है, right? जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हम present tense के अंदर base form use करते हैं verb का, ठीक है, मतलब जो पहला form होता है that one. But you need to decide when to use only base form and when to use base form along with the s. So most of the time you are going to add s when you are talking about third person singular. जब हम third person singular के बारे में बात करते हैं तब हम normally base form के साथ s add करते हैं, ठीक है. So you need to remember when are you going to use s along with the base form? जब हम third person के बारे में बात करते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ही, शी एंड इट. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही, शी एंड इट, वो किसके लिए यूज होता है? वो प्रोनाउंस किसके लिए यूज होते हैं? फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज एस अलॉन्ग विद द वर्ब. जैसे कि यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? स्पीक. Okay, so when you are using this action word along with he, she or it, ठीक है, ये he, she और it क्या है? प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के लिए. लेकिन अगर नाउन भी होता है थर्ड पर्सन तो भी आपको s लगाना पड़ेगा. इट डिपेंड्स, वो स्पेलिंग रूल हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा? s का साउंड ऐड करना होगा. और ये s का साउंड कब ऐड करेंगे हम? when we are talking about third person singular. Just a sentence over here, you can see he, she or it speaks or learns English at home. So here he, she and it refers to subject, that means जो action कर रहा है और जो third person है. और ये जो दूसरा है speak or learn, that is the verb, यानी action word. और वो कौन से फॉर्म में आएगा? verb. ये वर्ब कौन सा फॉर्म है बेटा? वो बेस फॉर्म प्लस एस और ई एस और आई ई एस, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एंड व्हेन आर वी गोइंग टू यूज ओनली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई, यू, वी एंड दे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, दैट इज आई, यू, वी एंड दे. सो अलॉन्ग विथ इट वी आर गोइंग टू यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड, that is speak or learn. We are not going to add s along with it.
जब हम आई, यू, वी और दे के बारे में बात करते हैं तब हम बेस फॉर्म के अंदर एस नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। आई और वी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आई एंड वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। फिर आता है यू जो सेकेंड पर्सन है, वी यूज यू फॉर सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल दोनों के लिए। एंड दे, इट दैट इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल। दे हम किसके लिए यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई, यू, वी एंड दे, हमारा वर्ब बेस फॉर्म में रहेगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज he, she and it, at that time only we are going to add the sound of s along with the verb base form. Okay, so I hope you are clear कि when are you going to use the base form alone and when are you going to use the base form along with s. ठीक है. So here are a few spelling rules. Let's learn them. And to spell the final s in the verbs with he, she and it. As I told you before that we are going to use the base form along with the sound s only for third person singular. That is he, she and it. उसके अलावा जो भी nouns होते हैं और pronouns है first person के लिए, second person के लिए और third person plural के लिए, that is I, you, we and they, उनके लिए हमें बेस फॉर्म ही यूज़ करना है. वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द साउंड ऑफ एस. नाउ देर आर सम रूल्स हाउ आर वी गोइंग टू ऐड द साउंड ऑफ एस. सो फर्स्ट वन इज विथ मोस्ट ऑफ द वर्ब्स वी जस्ट ऐड एस. सो देर आर सम वर्ड्स जिसके अंदर सिर्फ एस ऐड होता है, जैसे कि ड्रिंक ड्रिंक्स, रीड रीड्स एंड टॉक टॉक्स. देर आर मैनी अदर वर्ड्स लाइक वॉक वॉक्स, राइट. नाउ लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, that is with the verbs that ends with o, ch, ss, ss and x. So जो verbs होते हैं which ends in o, मतलब the last letter of that verb is o or ch, sh, ss and x, then we are going to add es. हम सिर्फ s add नहीं करेंगे, we are going to add es over there. For example, go becomes goes, teach teaches, wash washes, pass passes, mix mixes. For example, if I use I, along with it we are going to write go. But if I say he is third person singular, so along with it we are going to write goes. He goes, she goes, it goes. और अगर हम you यूज़ करते हैं, राइट, सो you कैन बी सेकेंड पर्सन सिंगुलर और सेकेंड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, बेस फॉर्म, वो है go. ओके. नाउ विद द वर्ब्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस y, वी ड्रॉप y एंड ऐड ies. सो द वर्ब्स जिसके लास्ट दो लेटर्स, ठीक है, उसमें लास्ट लेटर y है और उसके आगे वाला लेटर कॉन्सोनेंट है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर देयर, वी वुड बी ड्रॉपिंग द आई, दैट मीन्स ड्रॉपिंग द वाई, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिमूव वाई एंड वी आर गोइंग टू ऐड ies. सी द एग्जाम्पल ओवर हियर, fly. Over here last letter of the word is y and the word letter before it is l, which is consonant. Okay, so when the verb ends in consonant plus y, we are going to change it and write it flies. That means हमने y निकाल के ies add किया है. In the same way, dry becomes dries and try becomes tries. Now let's see the fourth rule. With the verbs that end in vowel plus y, we just add s. So students, ये बहुत important है और ये आपको याद रखना है कि जब आपका verb के लास्ट दो लेटर कॉन्सोनेंट प्लस y है तो हमें y को निकाल के ies ऐड करना है.
लेकिन आपका वर्ब अगर एंड होता है वॉवेल प्लस वाई, ठीक है, तो सिर्फ एस ऐड करना है, जैसे कि प्ले. नाउ इफ यू सी द वर्ड ओवर हियर, योर लास्ट लेटर इज वाई, राइट, और उसके आगे वाला लेटर कौन सा है? ए, दैट इज अ वॉवेल. ओके, so over here what are we going to do? We are not going to remove y, we are just going to add s. That means आपका play बन जाता है plays. In the same way enjoy becomes enjoys. And the last one is the verb have changes to has because it is an irregular form. That is an irregular form of verb. वो आप बाद में आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन ये आपको सिर्फ याद रखना है कि वी यूज़ हैव along with I, you, we and they. इन सब के साथ हमें क्या यूज़ करना है? have. ठीक है. And when are we going to use has? We are going to use has along with he, she and it. उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग? has. ठीक है. So I hope that you understood the spelling rules and also about when are you going to use the base form of the verb and when are you going to use the base form along with the sound s. ठीक है. हम base form किसके साथ यूज़ करते हैं? plural nouns के साथ. याद रखना आपको, plural nouns के साथ हमें base form यूज़ करना है except I and you. ठीक है. सिर्फ I और you ही ऐसे प्रोनाउंस है जिसके साथ हमें बेस फॉर्म ही यूज़ करना है. ठीक है. और सिंगुलर नाउन्स के साथ हमें एस वाला वर्ब यूज़ करना है. दैट मीन्स जिस वर्ब के अंदर एस का साउंड आता है, जैसे कि फ्लाइज, अ बर्ड फ्लाइज, राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ एज आई गेव यू एक्सरसाइज ए होमवर्क, ओवर हियर दैट इज एक्सरसाइज बी विच इज़ ऑल्सो होमवर्क. आई वुड बी शेयरिंग द आंसर्स आफ्टरवर्ड्स विथ यू. मैं आपको आंसर्स भेजने वाली हूँ बाद में, लेकिन अभी ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है. ओवर हियर you need to look at the verbs in the box and add s, es or ies to them and write them in the correct columns in the table below. You need to see the word and decide whether you are going to add s, es or ies, और accordingly आपको 3 कॉलम्स में लिखने हैं, s वाले में, es वाले में और ies वाले में. Yeah, now you need to remember the rules and apply those rules. Okay, here they have done 3 of them. The first one is act. act के अंदर सिर्फ s ऐड होगा. ठीक है. फिर दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा है reach. वो ये सी reach. Now the verb reach ends in ch. Right? Reach ends in ch. So when the verb ends in ch, we are going to add es along with it. That's why they have written reaches over here in this block, es वाले block में. और फिर study लिया है. ठीक है. So study, now if you see this word ends in consonant plus y. ठीक है. ये आपका consonant है और ये आपका y है. So what are we going to do over here? We would be removing the y and adding, अभी y नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है? ies. Right? So I hope that you understood how to carry out this exercise. So complete exercise A and exercise B in your textbook. We would be checking the answers in the next video. Till then, take care and see you soon, students.